ओके स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में जानेंगे। व्हाट इज द रिफ्लेक्स एक्शन? नाउ रिफ्लेक्स एक्शन इज नथिंग बट इट इज a sudden, involuntary, automatic, spontaneous response of the body parts to a particular stimulus. Now, what is stimulus? Stimulus is nothing but any change in the external environment or internal environment. Now, the reflex action, the structural and functional of the unit of the reflex action is called as reflex arc. Now, what is reflex arc? Reflex arc is the structural and functional unit of reflex action. It is another way we can define reflex arc as the path traveled by an impulse from receptor organ to effector organ via CNS is called reflex arc. Now, reflex action can be we can take the examples like sneezing, coughing, yawning, or withdrawal of hand after pinprick, or withdrawal of hand from a certain hot plate, or blinking of the eyes at a flash of light. So these are the example of reflex action. Now we will move forward for the reflex arc. We will study the what is the uh, reflex arc diagrammatically. So this is the diagram of the reflex arc. Now in this diagram we can see the different components of the reflex arc. Number one component is the receptor organ. Second component is the sensory neuron. Third component is the adjuster neuron. Fourth component is the motor neuron. Fifth component is the effector organ. And the sixth component is the synapse. This is the sixth component, synapse. Now one by one we can have points about that. Number one, receptor organ. Receptor organ is the any organ that receive the stimulus and convert it into impulse. रिसेप्टर ऑर्गन क्या करता है? स्टिम्युलस को इम्पल्स में कन्वर्ट करता है, पर्टिकुलरली सेंसरी इम्पल्स में कन्वर्ट करता है. स्टिम्युलस इनटू sensory impulse. What are the receptor organs? Receptor organs are like skin, eyes, ear, nose, etc. Here we have taken receptor organ one example as a skin as a example. Now this is about the receptor organ. What are the points about receptor organ? Receptor organs are like skin, eyes, ear, nose, tongue, etc. that receive the stimulus. What is the function of the receptor organ? It receives the stimulus and convert it into sensory impulse. Now if you take the example that if you have pricked a pin to the receptor organ, that is example skin, then that stimulus is converted into impulse and that impulse travel through the sensory neuron. Now second component of the reflex arc is sensory neuron. We have to make 2 to 3 points about sensory neuron. First of all, what is the location of the sensory neuron? Now this sensory neuron is located in the dorsal root ganglion of the spinal cord. स्पाइनल कॉर्ड के डॉर्सल रूट गैंग्लियन में इसका साइटोन और सेल बॉडी होता है सेंसरी न्यूरॉन का. क्या करता है ये? इट रिसीव द सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम द रिसेप्टर ऑर्गन एंड ट्रांसमिट इट टू द adjuster neuron, or we can say the CNS. Spinal cord is a part of CNS. So it receives the sensory impulse from receptor organ and transmit it to the CNS, particularly to the adjuster neuron. क्या पता है? 2 पॉइंट. कहाँ है और क्या करता है? It is present in the dorsal root ganglion of spinal cord. It receives the sensory impulse from receptor organ and transmit it to the adjuster neuron. Then next component is adjuster neuron.
एडजस्टर न्यूरॉन इज प्रेजेंट इन द ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये अंदर का जो है इट इज एच शेप्ड, ये ग्रे मैटर है, इसमें ये एडजस्टर न्यूरॉन है। दिस इज द एडजस्टर न्यूरॉन। Now what does it do? It receives the sensory impulse from sensory neuron, convert it into motor impulse. Adjuster neuron का main function क्या है? It converts sensory impulse into motor impulse and transmit it to the motor neuron. यहाँ से सेंसरी इम्पल्स लेगा, उसको कन्वर्ट करेगा मोटर इम्पल्स में और उसको ट्रांसमिट करेगा मोटर न्यूरॉन में। Then what are the points of adjuster neuron? It is present in the gray matter of spinal cord. It receives sensory impulse from the sensory neuron, convert it into motor impulse and transmit it to the motor neuron. Now fourth component, that is motor neuron. Where it is present? It is present in the ventral root of spinal cord. What does it do? It receives the motor impulse from adjuster neuron and transmit it to effector organ. Transmitted to effector organ. Motor neuron कहाँ है? It is present in the ventral root. What does it do? It receives the motor impulse from adjuster neuron and transmitted to effector organ. Now what is the fifth component? Effector organ. Effector organs are the organ on which effect of that sensory stimulus is takes place. Effector organs examples are muscles. Here we have taken example as a muscle. Another example is also a gland. Muscle and glands are the example of effector organs. What happens in the effector organ? They receive the motor impulse from the motor neuron and give proper response to the stimulus. अगर हम किसी अपने हाथ को अगर ये कोई पिन प्रिक कर देता है तो हम हाथ वहाँ से झटके से हटा देते हैं। तो ये जो झटके से हटाने का जो प्रोसेस है उसे हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। सपोज़ हमने क्या किया कि अपना जो हाथ है ये हाथ को यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे किसी ने अचानक से यहाँ पे कुछ चुबा दिया तो पिन प्रिक किया, तो हम हाथ वहाँ से झटके से ये जो हाथ है हटा देते हैं। So that is one of the reflex action. So this is the function of the effector organ. Then we will move forward for the next component, that is the synapse. Sixth component is last, synapse. What is synapse? It is the gap between two adjacent neurons. अभी देखिए यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन और एडजस्टर न्यूरॉन के बीच में यहाँ पे गैप है, इसे यहाँ पे एक सिनेप्स है, सिनेप्स, और यहाँ पे एक सिनेप्स है, दो सिनेप्स है। That is the gap between the axon and dendron ending of two adjacent neurons is called as synapse. अब जब यहाँ से सेंसरी इम्पल्स आता है, यहाँ तक आता है, तो यहाँ से आगे पास नहीं होता, तो क्या होता है, ये जो सिनेप्स है यहाँ पे एक न्यूरो हार्मोन सीक्रेट होता है, इसका नाम है एसिटिल कोलाइन। एसिटिल कोलाइन. Now this acetylcholine is a neurohormone, and that neurohormone fills the gap in the synapse and the impulse is transmitted towards the adjustor neuron. The same thing happen at this second synapse. When the motor impulse come at the end of the adjustor neuron, it again release acetylcholine and the gap is filled and the impulse is passed to the motor neuron. Now what happens after that? After that again the axon ending of the sensory neuron release another neurohormone that is called as acetylcholinesterase. The name of neurohormone is acetylcholinesterase. एसिटिलकोलिनेस्टर रिलीज करता है और फिर से यहाँ पे गैप बन जाता है। अगर गैप नहीं बनता है तो रिफ्लेक्स एक्शन बार बार वहीं हो जाएगा, इट विल हैपन कंटिन्यूअसली. सो इट अगेन गैप इज फॉर्म बाय एसिटिलकोलिनेस्टरेज, इस्टरेज लगाने का एसिटिलकोलाइन को. So this is the mechanism of the reflex action, and this is the total overall structure of the reflex arc. So we will conclude here of the reflex action and reflex arc. Okay, thank you.